The topic on which we are going to put light on today is mutations. How mutations occur in DNA, what happens when there are different kinds of changes and mutations in DNA. Is it fatal, and what diseases take place as a result of DNA mutations? So, all we'll go through quickly in this lecture. So, basically, the degree of change in the DNA. The least is in case of silent mutations, then comes the missense mutations, then the nonsense mutations, and then the frame shift mutations. यानी कि सबसे ज़्यादा लीस्ट जो ख़तरनाक कंडीशन है दैट इज़ ऑफ साइलेंट म्यूटेशंस बिकॉज उसमें अमाइनो एसिड सेम रहता है तो इतनी कोई हार्मफुल सिचुएशन नहीं होती. Single nucleotide substitutions are repaired by DNA polymerase and DNA ligase. The types of single nucleotide or point mutations. So, single nucleotide mutations are also called as point mutations. You need to memorize it. There are two types, transition and transversion. Transition is a change from purine to purine, example adenine to guanine, or pyrimidine to pyrimidine. फॉर एग्जाम्पल साइटोसिन टू थायमिन. यानी कि ट्रांजिशन में क्या होगा कि एक प्यूरिन है लेकिन जो अमाइनो एसिड चेंज हुआ, जो बेस चेंज हुई वो भी किसी प्यूरिन से रिप्लेस हुई. अगर pyrimidine थी तो वो pyrimidine से रिप्लेस हुई. बट व्हाट हैपेंस इन ट्रांसवर्जन इज दैट देयर इज अ चेंज फ्रॉम प्यूरिन टू pyrimidine और फ्रॉम pyrimidine टू प्यूरिन. यानी अगर एडेनिन है तो उसकी जगह रिप्लेसमेंट हो गई थायामीन की. Adenine is a purine and thymine is a pyrimidine. So this happens in transversion. So these are the two kinds of single nucleotide mutations. Now comes the single nucleotide substitutions. But before that, we'll see what's you see. This is the coding DNA. This is the mRNA codon, and they've shown the amino acids which are encoded by these. So this is the original sequence they've shown here, and these are the different kinds of mutations. First, we'll see what's written in there, and then we'll come to it. So single nucleotide substitutions involve silent mutation. What happens in silent mutation? Basically, silent mutation codes for the same synonymous amino acid. So it often involves the third position of codon, that is the transfer RNA wobble. Basically, transfer RNA wobble, it allows for the flexibility in the third base of the codon, and it enables a single transfer RNA to recognize multiple codons, which can result in silent mutations where a point mutation doesn't change the encoded amino acid due to the degeneracy of genetic code. तो इसको आप ना भी समझें, what the important point here is कि साइलेंट म्यूटेशन क्या होती है. एक अमाइनो एसिड जिससे रिप्लेस हुआ वो भी वही अमाइनो एसिड था, इसको हम साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं क्योंकि हमें पता नहीं चला कि म्यूटेशन तो हो गई है बट इट्स द सेम अमाइनो एसिड. अगर इस डायग्राम में देखें हम इस फिगर में, सो ए गेट्स रिप्लेस्ड बाय ए बट इट्स स्टिल अ म्यूटेशन. ठीक है. Then comes the missense mutation. It results in changed amino acid called conservative if the new amino acid has similar chemical structure as that of the previous one. ठीक है. यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि जो नया अमाइनो एसिड आए वो होगा तो डिफरेंट ही. मिससेंस म्यूटेशन में वो अमाइनो एसिड डिफरेंट होगा उस अमाइनो एसिड से जो पहले उस पोजीशन पर था, बट इट मे हैव सिमिलर केमिकल स्ट्रक्चर like the previous one. Examples क्या missense mutation की sickle cell disease. Please remember sickle cell disease is an example of missense mutation. So what happens in sickle cell disease? We have been studying it since ages. There is substitution of glutamic acid with valine. और missense mutation की फिगर में उन्होंने दिखाया है that thiamine के साथ पेयर अप किसने करना होता है? एडेनिन ने, बट यहाँ पर यूरेसिल है, सो अमाइनो एसिड चेंज हो जाएगा, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाएगा. ऑलराइट. इसके बाद है नॉनसेंस म्यूटेशन. इट रिजल्ट्स इन अर्ली स्टॉप कोडोन. यानी जो अमाइनो जो कोडोन रिप्लेस होता है वो एक ऐसे सीक्वेंस में कन्वर्ट हो जाता है जो कि
एक स्टॉप कोडोन का होता है, लाइक UGA, UAA और UAG. इट यूजुअली जनरेट्स अ नॉन फंक्शनल प्रोटीन, बिकॉज स्टॉप कोडोन आ गया तो हो सकता है कि मजीद प्रोटीन आगे बननी थी बट इट डजंट फॉर्म, तो एक नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनती है जिसका कोई सच रोल नहीं होता. स्टॉप द नॉनसेंस, दिस इज जस्ट अ निमोनिक टू रिमेंबर इट. तो ये इन्होंने नॉनसेंस म्यूटेशन दिखाई हुई है कि यहाँ पर थायामीन जो है इसने पेयर अप करना था विद ए, लेकिन यहाँ पर यूरेसिल आ गया और यूरेसिल UA3 से स्टॉप को डू, सो ट्रांसलेशन जो है वो हॉल्ट हो जाएगी. Other kinds of mutations, a very important type of mutation is frame shift mutation. What happens in it, there is deletion or insertion of any number of nucleotides not divisible by 3, or if divisible by 3 split across adjacent codons. Mostly uh, जब 3 कोडोन्स आते हैं एक साथ ही तो एज सच फ्रेम शिफ्ट नहीं होता, बट अगर एक कुछ ऐसे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, तो वो जब या तो वो ऐड हो सकते हैं या तो हम उनको ऐड करें तो हमारा जितना भी ज़्यादा वो फ्रेम है वो शिफ्ट हो जाएगा, या फिर हम रिमूव कर लें 3 से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स, मे बी 5 मे बी 7, तो रिजल्टिंग प्रोटीन तो हमारे पास ऑल्टर्ड बनेगी और हम डिलीशन भी कर सकते हैं, इंसर्शन भी कर सकते हैं. तो रिजल्टेंटली क्या होता है, देयर इज मिस रीडिंग ऑफ ऑल न्यूक्लियोटाइड्स डाउनस्ट्रीम. सारों की मिस रीडिंग हो जाएगी, प्रोटीन जो बनेगी इट में बी शॉर्टर और लॉन्गर एंड इट्स फंक्शन में बी डिस्ट्रप्टेड और ऑल्टर्ड. इट मे अकर ड्यू टू स्लिपेज ऑफ द DNA polymerase during replication at the repetitive nucleotide regions. फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती क्या है, इसकी कॉज क्या है, उसकी रीज़न उन्हें बताइए कि जो रेपिटेटिव न्यूक्लियोटाइड रीजन्स होते हैं रेप्लिकेशन के दौरान वहाँ पर जो DNA पोलीमरेज है अगर उसकी स्लिपेज हो जाए तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाती है. एग्जाम्पल्स of frame shift mutation include Duchenne muscular dystrophy, Tay-Sachs disease, cystic fibrosis. We'll just go through these diseases jaldi so that you just get a bird eyes view of basically what is these diseases are about. Duchenne muscular dystrophy, abbreviated as DMD, it is basically an X-linked recessive disorder and it is caused by mutations in the dystrophin gene, which leads to progressive muscle weakness, degeneration, cardiomyopathy, typically presenting in early childhood with elevated creatine kinase (CK) levels and muscle biopsy showing dystrophin deficiency. What happens in Tay-Sachs disease? It is an autosomal recessive disorder. It is caused by deficiency of hexosaminidase 2. It leads to accumulation of GM2 gangliosides in the neurons, and it results in progressive neurodegeneration, developmental delay, and characteristic there is a cherry red spot on the macula which typically presents in infancy. And what happens in cystic fibrosis? It is an autosomal recessive disorder. It is caused by mutations in the CFTR gene, which leads to abnormal chloride transport, which results in thickened secretions, multi-organ involvement, including respiratory, GIT symptoms such as recurrent lung infections and pancreatic insufficiency. So this is about cystic fibrosis, and they've shown here कि यहाँ से इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर या तो वो ये नॉर्मल हमारे पास सीक्वेंस था ओरिजिनल सीक्वेंस, तो यहाँ पर फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन में क्या करें कि एक एडिशन करें एक हमारे पास बेस की एक न्यूक्लियोटाइड की, सही है. और डिलीशन में क्या कर रहे हैं कि उन्होंने वो जी वाला जो था उसको रिमूव कर दिया है. सो यहाँ पर इन्होंने ये शो किया है. Splice site mutations. Alright, splice site mutations. What happens in that? There is retained intron in messenger RNA, and the protein formed is with impaired or altered function. Examples: rare causes of cancers, dementia, epilepsy, some types of beta thalassemia, Gaucher disease, Marfan syndrome. स्प्लाइसिंग में क्या होता है? स्प्लाइसिंग इज़ अ फिनोमेना, इट इज़ अ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल फिनोमेना. इसमें होता क्या है कि जो हमारे पास जो mRNA बनता है, it has certain regions. Some regions are called introns, some are called exons. So exons are those they are the protein coding regions, they are expressed, whereas the introns, they are removed, they are not essential. Mostly they are non-essential, so they are removed. But what happens in splice site mutation? Intron is retained, so it is not removed from the newly formed mRNA. So protein is altered. So they have mentioned the diseases.
We'll go through beta thalassemia. What is beta thalassemia? You should know it's a disease. It's an autosomal recessive disorder. It is caused by mutations in the HBB gene and leading to reduced or absent beta globin production and resulting in microcytic anemia, hemolysis. Characteristic findings such as target cells, basophilic stippling, increased HbA2 and HbF levels. Whereas Gaucher disease is an autosomal recessive disorder. It is also a lysosomal storage disease, as was Tay Sachs disease. And Gaucher disease is caused by deficiency of glucocerebrosidase, and it leads to accumulation of glucocerebroside in macrophages. It results in hepatosplenomegaly, anemia, thrombocytopenia, bone pain, with type 1 being the most common. And let's just dive through Marfan syndrome. It's an autosomal dominant disorder. It is caused by mutations in FPN1 gene, leading to defective fibrillin 1 production, resulting in characteristic features like tall stature, arachnodactyly, lens subluxation, aortic root dilatation, which is the most common symptom, increased risk of aortic dissection and rupture. So this all comes under Marfan syndrome. Then we have the slipped strand mispairing. अच्छा, one thing to I'll mention here कि even though हम मतलब एक certain topic पढ़े हैं mutations का, but I am going into a little bit detail of each disease because you should know why, कि इस disease का नाम यहाँ पर क्यों है, and you should know a little bit about the disease. तो इसलिए we're just going through the diseases as well. So, slipped strand mispairing, it occurs when a DNA polymerase slips and it either inserts or removes one or more additional nucleotides by mistake in an area of repetitive nucleotides. तो एक ऐसा रीजन है जहाँ पर repetitive nucleotides है, वहाँ पर mistakenly या तो एडिशनल न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर दिए जाते हैं या फिर रिमूव कर दिए जाते हैं, और करता कौन है? डीएनए पॉलीमरेज करता है स्लिपेज की वजह से. Anticipation occurs secondary to insertion of increased repeats across generations. Example क्या है? CAG repeat expansion in Huntington disease. So Huntington disease is an autosomal dominant neurodegenerative disorder, and it is caused by the expansion of the CAG repeats in the Huntington gene. It leads to chorea, symptoms such as ataxia, dementia, psychiatric symptoms, and typically it presents in midlife with characteristic atrophy of caudate nucleus and the putamen seen on imaging. Right, so these were the mutations. I think this is it for today. This lecture sums up here. We have discussed about all the mutations. We discussed about single nucleotide substitutions, which involve silent, missense, nonsense mutations. Silent mutations are not that fatal. Missense mutations, most important example, sickle cell disease. Nonsense mutation, for example, um, it occurs in many cases. Other mutations include frame shift, splice site, and slip strand mispairing. So that's it.